Good evening to all of you. Join कले समस्ते. Everyone join. Okay. Very good evening, Nandini. Nandini, Subhalakshmi. समस्ते join कले. पढ़िले समस्ते लास्ट क्लास रे जहाँ मैं पढ़ी थिले से सब पढ़िले कि नहीं? राधे राधे श्रेया. जहाँ जहाँ पढ़ी थिले लास्ट क्लास बैंकिंग सेक्टर रे समस्ते पढ़िले ना नहीं? किछि बाकी अछि? पढ़िले सब बुझी पारले नोट्स कले एडिटोरियल एनालिसिस रो क्लास आसीथिला कले द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास आसीथिला ताकू कले ना नहीं करिना केजन करचन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास. एडिटोरियल क्लास इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर ओसीएस एग्जामिनेशन. तो ओसीएस पई जो माने पढुचंदी एडिटोरियल क्लास बहुत इंपोर्टेंट मानक पई. सो केबे भी ताकू मिस करंतुनी से क्लास करंतु तार नोट्स लेखंतु नचेत परे हैरान हेबे. प्रणाम सतीश, लुसी, मिता, प्रिया. भलो अछन समस्ते. टॉपिक स्टार्ट करबा आज रो. एवरीवन जॉइन करी गले. गुड इवनिंग स्वागतिका. लुसी भलो अछि मु. व्हाट अबाउट यू? समस्ते भलो अछंती? प्रतीक्षा फास्ट क्लास नो प्रॉब्लम. नोट्स सब टेलीग्राम चैनल ले पाइब. ऑल नोट्स आर अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल. करंट नहीं ठीक अच्छे. करंट आसले नोट्स करिवो नो प्रॉब्लम. चलो स्टार्ट करबा. आज रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि मनी मार्केट. मनी मार्केट ऊपर आज डिस्कशन करबा. सो लास्ट टाइम मनी कौन कहितली, फाइनेंशियल मार्केट कौन कहितली, हां कि नहीं? लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट. मनी रो डेफिनेशन कौन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? Money is anything that is proclaimed by law as a medium of exchange. कौन कहली? व्हाट इज मनी? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज रो अर्थ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज रो अर्थ कोन ना, जहा को यूज करिकि जहा को बदली कि ता बदल रे हमें किछि पाई परिबा. कौन कहली? जहा बदल रे हमें किछि पाई परिबा. सो लाइक पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. सो नोट्स एंड कॉइन्स दे आर कॉल्ड फिएट मनी. फिएट मनी रो अर्थ कोन? जो नोट्स और कॉइन्स देखुचे ताको हमें फिएट मनी बोली कहूचे. ज्योति आज फास्ट सिलेबस एनालिसिस कर दियंतु, लास्ट को भूल जातु. ठीक अछि, आज कहि दिउ सिलेबस. ए मनीटा सरू तापर सिलेबस एनालिसिस कर दो. ठीक अछि. देखो ते इस सिलेबस रे देखो काली टू अछि. गत काली रो क्लास रु थिला आईडी देख परथो समझ. इकोनॉमिक्स सिलेबस 6/6/2025 8:59. काली टू फाइल टा रेडी करके रखी छी ऑलरेडी. हैला गत काली टू अछि. देखो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिलेबस काली मने पड़लानी करने. ठीक अछि, आज हम डिस्कस कर दवा सिलेबस. जस्ट गोटे कांसेप्ट, खाली छोटिया कांसेप्ट. मनी कोन कहि दिबी तापर आसे सिलेबस. सिंपल कांसेप्ट ऑफ मनी, देन विल कम टू सिलेबस.
ताले मनी कोन देखिला मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब रे जाको यूज करछे नोट्स एंड कॉइन्स जो नोट्स और कॉइन्स देखुचे सेठी किछि बैकअप अछि सेठी किछि अथॉरिटी अछि is there any authority which gives a backup to the notes and coin yes kiye and the authority of the government kon kal that is the authority of the government then next देखिए different types of money first is full bodied money यार अर्थ कोन ना यार worth केते ना as money equals to its value as commodity for example मु कहली गोटे 500 rupees रो let's say you have a coin or 20 rupees coin 100 rupees coin now से 500 rupees coin रो value कोन 500 rupees value means जो material यूज हिच से material कोन 500 rupees रो यूज हिच बा 500 टंका रो notes 500 टंका रो notes रे कोन कहली 500 टंका रो notes रे कोन यूज हिच 500 टंका रो material नो नुहे मु कहबी गोटे गोल्ड कॉइन जो गोल्ड कॉइन रो वैल्यू होची मन कर 50000 टका तब से गोल्ड कॉइन रो वर्थ 50000 की नहीं गोल्ड कॉइन रो मटेरियल यूज होची 50000 ताको कहे फुल बॉडीड मनी किए ना जो तेरे तार वर्थ ऑफ द मनी इज इक्वल्स टू इट्स फेस वैल्यू तार फेस वैल्यू जति की फेस वैल्यू माने सेते लेखा आइची जति की कोन कहल सेते लेखा आइची जति की इट इज द काइंड ऑफ मनी व्हिच वर्थ इज इक्वल्स टू इट्स फेस वैल्यू देखो हम कहते फुल बॉडीड मनी टोकन मनी कौन बा पेपर मनी कौन वर्थ ऑफ द मनी is far greater than that of a product for example paper currency product 500 टंका रो नोट्स तैयारी करिया पे केते टंका खटौथियो मे बी 20 रुपीस बट 500 टंका रो वैल्यू केते 500 रुपीस 500 रो वैल्यू केते 500 रुपीस ताको जे टोकन मनी बा पेपर मनी क्लियर पेपर मनी कोन पेपर मनी एंड फुल बॉडीड मनी बुझिए गला समस्त गुना नहीं fiat money कौन कहली now when it is defined as a government issued currency not backed by any physical commodity like gold silver तले इटी आ गोटे कांसेप्ट सिखिबा हमें मु कहली 500 रुपीस रो गोटे मनी फेस वैल्यू अछि 500 रुपीस रो नोट तले यार फेस वैल्यू 500 रुपीस एको तैयारी करियो केतना खर्च होइछि लेट्स से 50 रुपीस तले इटी प्रॉफिट हैला केते ना 450 रुपीस जो 450 रुपीस प्रॉफिट है से 450 रुपीस प्रॉफिट को कुआ जाए सीनियरेज मन रखिए फेस वैल्यू माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कहली फेस वैल्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट ताको कहले हम करना सीनियरेज क्लियर सीनियरेज कौन जहाँ क्वेश्चन आसो जो पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर कोल्ड मनी हॉट मनी ही परियो हॉट मनी कोल्ड मनी कौन कांसेप्ट ऑफ जल्दी इकोनॉमी को आसुचे এবং जल्दी बाहरी पड़े से ग्राउंड रहिते ना एटा बुझे गला इज दिस क्लियर मनी कौन एवं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी कौन कहली इंपोर्टेंट सीनियरेज बुझिले समस्ते व्हाट इज सीनियरेज बुझेला कि नहीं यस सीनियरेज क्लियर चलो कौन दरकार थिला आगु जिबा आगु तुम दरकार थिला सिलेबस ये बुक लिस्ट अच्छी सिलेबस कहि दोची फास्ट सिलेबस हला प्रथम तुमर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एटी इंट्रोडक्शन रे आमे जहाँ जहाँ पढ़ीचे सेही गुडाक पढ़िबे इंट्रोडक्शन बा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाए सेठी कोन पढ़िबे आपण बेसिक्स रे पढ़िबे डिमांड सप्लाई कर्व फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जोटी हम देखले लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखले लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आउ कोन पढ़िथिले बेसिक्स रे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फेस पढ़िथिले ना एबडा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जोटी हमें देखले कोन व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस what how and for whom to produce एटा देखले प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बुझला एडाला बेसिक्स रे गला तापर देखबे नेशनल इनकम डिफरेंट टाइप्स कोन को मेथड अछि नेशनल इनकम यूज करिवारे
एंजल्स कर्व, एंजल रो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये सब देखिए। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज ऑल अबाउट एचडीआई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स, ओईसीडी लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रीन जीडीपी, ट्रिपल पी ये सब देखिए। नेक्स्ट प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938, मिक्स्ड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग रे देखिए प्लानिंग कमिशन एंड नीति आयोग, नीति आयोग आसला 2015 रे, ता पूर्व थला कोन प्लानिंग कमिशन एंड एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म रे इवोल्यूशन मोस्टली देखा जाए इंडियन इकोनॉमी रे, पढ़ी पढ़ी आसबे 1947 रु 91, तापरे कोविड हैला 2020 एवं करेंट 2025 पर्यंत केमती इकोनॉमी चेंज हिच हैला। देन देखिए एम्प्लॉयमेंट, लेबर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ये सब देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट। देन फिस्कल पॉलिसी रे पढ़िबे बजेट, एटी पढ़िबे कोन अबाउट बजेट, तो बजेट ऊपर हम पढ़ी डिस्कशन करी ऑलरेडी, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, इन अनेक पॉइंट डिस्कशन हिच हां कि नहीं। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग कोन, एफआरपीएम एक्ट, पब्लिक डेट, एक्सटर्नल डेट, रुपी डेट, मसाला बॉन्ड ये सब देखिए पब्लिक डेट रे। मॉनिटरी पॉलिसी रे कहिथि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ, एमसीएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर ये सब इंपोर्टेंट। देन या सहित हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग रो हिस्ट्री इन इंडिया, आरबीआई फंक्शंस, रोल्स, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिट कंट्रोल मेथड, सबुठ इंपोर्टेंट होची क्रेडिट कंट्रोल मेथड, क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देन इन्फ्लेशन, different types of inflation, in how to measure inflation, जीडीपी डिफ्लेक्टर कौन, सीपीआई कौन, डब्ल्यूपीआई कौन ये सब देखिए। मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये देखिए कौन मनी मार्केट, बिल मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ये सब इंपोर्टेंट। देन स्टॉक मार्केट, ये देखिए स्टॉक एक्सचेंज कौन, बीएसई, एनएसई, सेंसेक्स कौन, निफ्टी, निफ्टी एंड निफ्टी जूनियर, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, डीम्यूचुअलाइजेशन, सेबी ये सब पढ़िबे। टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन जो टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करिचे ऑलरेडी, लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेशियो कोन, टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स हेवेन्स हैला, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को आसीबे तापरे, एटा गोटे टिके बेसी मेंस रिलेटेड टॉपिक जीएसटी। ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी एंड टैक्स रिफॉर्म, लाइक टैक्स हार्मोनाइजेशन कोन, इक्वलाइजेशन लेवी कोन, G7 प्रपोजल ये सब पढ़िबे। तापर आसीबे बैंकिंग को, प्रिलिम्स रे क्वेश्चन लास्ट टाइम कम आस्तिला, 5टा रु 6टा क्वेश्चन आस्तिला, बा हम कहबी आउ दुटा मिसले 7टा, तुमर जदी इकोनॉमिक कोन सेटा डेमोग्राफिक डिविडेंड रो क्वेश्चन देखिबो 7टा क्वेश्चन आसीतिला, बट ता पूर्वरु पाखा पाखी 12टा 10टा 12टा क्वेश्चन आसे। सो ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 12 questions from economics. Banking, classification of banks, scheduled, non-scheduled bank, public sector bank, cooperatives, types, history, characteristics, advantages, ये सब देखिए cooperative. Fintech regulation in India, cash to digital facilitator, RBI, FI index कौन, poverty, unemployment, poverty as a vicious cycle, MDG, SDG, universal basic income, ये सब देखिए. Then देखिए economic inequality. पीडीएफ पाइबे ओपीएससी वाला चैनल लो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एठी देखियो कोन पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी केमती जे सबुठ इंपोर्टेंट प्रिलिम्स पाई लॉरेंस कर्व एंड पुंजनेट कर्व, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, इंक्लूसिव ग्रोथ इंपोर्टेंट, एग्रीकल्चर, फूड डेफिसिट टू फूड सरप्लस, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, डबलिंग फार्मर्स इनकम हैला, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल क्रेडिट, फार्म लॉज ये सब देखिए. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा, एनर्जी, साइबर, वाटर ये सब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर. पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्लाइमेट बॉन्ड, सोशल बॉन्ड कौन, पीएम गति शक्ति योजना कौन, या पर भी कही पूर्व गति शक्ति योजना. एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंस, चाइल्ड लेबर ये सब देखिए. तापर देखिए एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया कौन कहली, एक्सटर्नल
सेक्टर फाइनेंशियल अकाउंट कौन बीओपी कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सचेंज रेट ये सब देखिए रूपी कन्वर्टेबिलिटी जोटा देखो ना $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज 85 रुपीज एटा देन फॉरेन ट्रेड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देयर रोल लाइक G7 G15 G20 ये सब देखिए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन लाइक IMF वर्ल्ड बैंक है ना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट फेवर्ड नेशन ये सब देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी से आसुनी आसुच टेलीग्राम चैनल में चेक करथिली आसुच इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो लिखे ट्रिप्स रिलेटेड एग्रीमेंट कौन अच्छी बुझेला ये टॉपिक ब्रॉडली एतिक टॉपिक पढ़िबार अछि हम बस ताले टॉपिक पढ़िबे कोठु आ केमती पढ़िबे एतिक टॉपिक को कोठु पढ़िबे आ केमती पढ़िबे ताले कहला व्हाट इज द सोर्स सोर्स कौन व्हाट इज द सोर्स आपण पढ़े सम्राट सर इकोनॉमिक क्लास ठीक अच्छी मोस्ट ऑफ द टॉपिक मुझे कवर करी है ना डोंट वरी करंट अफेयर भी पढ़िबे सोर्स माने मुझे बुक लिस्ट कथा कहूँ मुझे तो पढ़ेबी नो डाउट पढ़िबा हम सब कवर करा जाए मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल कवर याको पढ़िबा पई एनसीईआरटी 9 11 12 पढ़ी परिबे नीति आयोग रिपोर्ट दिस इज इंपोर्टेंट बुक योर चॉइस रमेश सिंह पढ़ विवेक सिंह पढ़ नितिन सिंघानिया पढ़ योर चॉइस द हिंदू बजेट इकोनॉमिक सर्वे मुझे कहबी जो माने क्लास न कर बुक्स रेफर करेंगे जो माने है ना सुनो जो माने क्लास करू नाहंती से माने बुक रेफर करिया चाहिए बुक रेफर करिवे बट जो माने क्लास करूछंती बुक्स रेफर करिवे से माने केवल नोट्स पढ़िवे क्लास नोट्स से क्लास नोट्स रे सब अछि क्लास नोट्स भितर ये सब गुड़ा कवर होती एनसीईआरटी अच्छी नीति आयोग अच्छी रमेश सिंह अच्छी हिंदू अच्छी बजेट इकोनॉमिक सर्वे अच्छी सब अच्छी बुझे कि नहीं नितिन सिंघानिया नुह नितिन कौन ना गोटे अच्छी गोटे कौन से आईएएस अफिसर गोटे बही लिखी कौन ना नितिन सिंघानिया नितिन गडकरी कौन ना कौन से बहीटा नितिन सिंघानिया अच्छी इकोनॉमिक्स अच्छी आर्ट एंड कल्चर अच्छी इकोनॉमिक्स भी अच्छी वेस्ट बेंगल कैडर आईएएस एनसीईआरटी रो मु पूरा क्लास नहीं आसबी यूट्यूब रे क्लास वाइज चैप्टर वाइज एनसीईआरटी 9 10 11 12 जहाँ इंपोर्टेंट सब नहीं आसबी यूट्यूब सो एनसीईआरटी पई व्यस्त होवा किसी दरकार नहीं बुझेला एनसीईआरटी एटी कवर हो नेक्स्ट रहा आउ जहाँ रहा से क्लास रू तुमको रेफर करिया पड़ो जो पढ़ाऊ से क्लास आ क्लास नोट्स रेफर कले पूरा सिलेबस कवर कर पारिबो क्लास कले आउ किछि करबोनी गोटिए पाठ पढ़िबो द हिंदू ताकू भी जदि न पढ़ुछ एटा भी मंथली आसुची एटा भी मंथली आसुची कंपाइलेशन काली आसला द हिंदू एडिटोरियल कहीं करजंदी ई नहीं हां केते रिलीजियस स्टूडेंट देखो केते परिश्रमी पिला सब परिश्रम पिला ये भी करना हिंदू एडिटोरियल हो ठीक अच्छे करंतुनी सब खराब पाठ तक पढ़ले फेल हो तो से पाठ करवा कि दरकार नहीं आम अलग पाठ पढ़िया चलो ये गला बुक लिस्ट कहीदेली सिलेबस तुम आज रिक्वेस्टेड सिलेबस डिस्कस करदेली ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको टे मन रखिए इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक है कौन कहली गोटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिए टॉपिक सब टॉपिक बनईदेवे यू शुड नो योर सिलेबस प्रॉपर्ली सिलेबस टाक जानतु सो दैट इजी हम एग्जाम क्वालिफाई करने इजी हम सिलेबस टॉपिक सब टॉपिक बनातु से अनुसार प्रिपेयर
ठीक अच्छे जदि करुच बहुत बढ़िया। चलो आसवा ताहले टॉपिक को केतटा क्वेश्चन भी अच्छी आज करने क्वेश्चन भी केतटा अच्छी। तो आज टॉपिक थिला कोन मनी मार्केट। मनी मार्केट कहले हम कोन बुझे काली हम डिस्कशन करथिले फाइनेंशियल मार्केट ऊपर कोन कहली काली हम डिस्कशन करथिले फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट केते प्रकार देखथिले हम फाइनेंशियल मार्केट को हम केते भाग रे डिवाइड करथिले ना दी भाग रे डिवाइड करथिले गोटे कहथिली मनी मार्केट गोटे कहथिली मनी मार्केट आ गोटे कोन कहथिली कैपिटल मार्केट कौन सेटा मनी मार्केट आ गोटे कैपिटल मार्केट आउ को ग्राउंड रे हम डिवाइड कले मनी मार्केट आउ कैपिटल मार्केट याको हम डिवाइड करते शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ई ग्राउंड एटा थिला लॉन्ग टर्म मार्केट एटा करथिले हम कोन शॉर्ट टर्म मार्केट गोटे करथिले लॉन्ग टर्म गोटे करथिले ई ग्राउंड रे रिक्वायरमेंट कौन थिला ना यार लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट थिला लाइक प्लांट्स मशीनरी ये सब देन शॉर्ट टर्म रे हमर कौन थिला रिक्वायरमेंट एटा को डे टू डे एक्सपेंस को मीट करवा डे टू डे एक्सपेंस को मीट करवा मे बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट है ये सब को मीट करवा थिला हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव ये सब को मीट करवा थिला हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव बुझियला ना नहीं तो याको हम दी भाग रे डिवाइड करथिले गोटे मनी मार्केट आ गोटे देखिला हम कैपिटल मार्केट ठीक है कैपिटल मार्केट ऊपर अच्छी क्लास डिस्कस करिवि हो ताले हम देखिले मनी कोन तापर देखिया हम मनी सप्लाई कहले कोन बुझे मनी सप्लाई इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट कोन कहली व्हाट इज मनी सप्लाई इज क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट ताले ये क्वांटिटी ऑफ मनी टा केमिते डिसाइड हुए और व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ये कुछ सेवरल वेरिएबल्स अफेक्ट मनी सप्लाई कौन ना फर्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय सेंट्रल बैंक कौन कहले ओपन मार्केट ऑपरेशन हुए कौन ना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन कहली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रो किना बिका हबो की करिवे ना मन कर आरबीआई देले कौन ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बा को जी सिक्योरिटी बोली काकू मे बी टू पब्लिक बिक्री कले पब्लिक टू कौन ने टंका नहीं जिवे मनी नहीं गले आउ गोटे है मनी नहीं जिवे तो लिक्विडिटी कौन हम मनी नहीं गले लिक्विडिटी रिड्यूस हो जिते या रिटर्न करदे जी सिक्यूरीटी जिते क्या पब्लिक ठू नहीं जी सिक्यूरीटी गवर्नमेंट सिक्यूरीटी नहीं जी पब्लिक को बदल कौन देवे ना ये टंका देवा पड़ो यही कंडीशन जो मनी दि जाऊँगी से देखा लिक्विडिटी कौन हम ना लिक्विडिटीटा ये इनक्रीज हो कौन हम ये ना लिक्विडिटी इनक्रीज हो सिंपल कथा मैंने देखिए दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिक्विडिटी थ्रू ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन देन आप कौन रिजर्व रिक्वायरमेंट रे कौन देखिला हमें जो सीआरआर एसएलआर पढ़िथिले मन अछि काली सीआरआर एसएलआर मते कोन यदि सीआरआर एसएलआर बढ़ी जाए ताले लिक्विडिटी कमिबो ना बढ़िबो सीआरआर एसएलआर बढ़ी गले लिक्विडिटी कमिबो ना बढ़िबो ये बढ़ी गले लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली कमी जो देन ट्रेड साइकिल मींस कौन देखुछा ना बूम जदि बूम हला रिसेशन हला से समय मते इंपैक्ट पड़िबो आगु जानिबो ट्रेड साइकिल कोन पब्लिक प्रेफरेंस मींस पब्लिक प्रॉस्पेरिटी है माने पब्लिक कोथरे इंटरेस्ट अछि पब्लिक चाहूची निज पाखरे टंका रखिया को यूटिलाइज करिया को ना चाहूची पब्लिक आको डिपॉजिट करिवो दैट इज इंपोर्टेंट न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट यदि न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट आसे ताहले यार मध्य इंपैक्ट पड़ियो मन कर आईपीओ आसीगला गोटे बहुत अधिक गोटे कंपनी ताले कोन हो आईपीओ इन्वेस्टमेंट हो सब लिक्विडिटी ऊपर इंपैक्ट पड़ियो मनी वेलोसिटी मींस द रेट एट व्हिच मनी सर्कुलेट्स मनी सर्कुलेशन इज इंपोर्टेंट
मनी सर्कुलेशन इंपोर्टेंट ना मनी डिपोजिट इज इंपोर्टेंट जनक पाखे 500 कोटी टंका अछि दैट इज इंपोर्टेंट ना दैट इज इंपोर्टेंट ना जनक पाखे जो 500 कोटी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेटा इंपोर्टेंट कोटा इंपोर्टेंट व्हिच इज इंपोर्टेंट money circulation is important yes circulation is important now government expenditure by government spending and fiscal policy they influence also the money supply if they also influence money supply बुझे गला now अभी देखिए what are the sources of money supply money कौन जानिले money supply कौन जानिले को फैक्टर money supply ऊपर impact पकोछन जानिले एबे हमें जानिबा what are the sources of money supply कौन कौन source most important source is central bank किए ना सेंट्रल बैंक ले आरबीआई के आरबीआई तल सेंट्रल बैंक कौन करिवे ना इश्यू करन करेंसी नोट्स ऑफ कॉइन इश्यू करन सो आरबीआई यूज मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू इंपैक्ट द मनी सप्लाई बाय मॉडिफाइंग इंटरेस्ट रेट्स तले टी कौन करिवे ना इंटरेस्ट रेट चेंज करिवे तले मते खाली मने पकेदला रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले लिक्विडिटी बढ़िबो ना कमिबो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले लिक्विडिटी बढ़िबो ना कमिबो लिक्विडिटी बढ़िबो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िले लिक्विडिटी कमिबो हां कि नहीं एटा बुझ पड़तन तो समझते काली एग्जांपल देथिले रेपो कथा कहितली 6 रु 5.5 देन कमर्शियल बैंक सोर्स एटा केते बेले होय कमर्शियल बैंक लेंडिंग केते बेले बढ़िबो जेते बेले कमर्शियल बैंक रो तुमरो कोन कहतो रेपोटा तळे कमिबो रेपो कमिले कमर्शियल बैंक को लोन मिलिबो कम रे तो सी पुनी लोन दो बुझी गला चलो फाइनेंशियल सिस्टम पढ़िथिले शेड्यूल कमर्शियल बैंक पढ़िथिले मने अछि शेड्यूल कमर्शियल बैंक ता कोडी मेंशन हेचंदी शेड्यूल कमर्शियल बैंक कोडी मेंशन हेचंदी ताले देखिले हम Who schedule? In which schedule? In which schedule? Second schedule बहुत बढ़िया किसी नॉन शेड्यूल बैंक रो एग्जांपल किसी नॉन शेड्यूल बैंक रो एग्जांपल जम्मू कश्मीर बैंक बढ़िया ओके किसी नेशनलाइज्ड बैंक रो एग्जांपल किसी नेशनलाइज्ड बैंक रो एग्जांपल किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक रो एग्जांपल नेशनलाइज समझते जानछन किसी प्राइवेट सेक्टर रो एग्जांपल HDFC ICICI Axis एवं सब न्यू बैंक को जाए HDFC ICICI Axis एवं सब न्यू बैंक्स को जाए फॉरेन बैंक रो एग्जांपल फॉरेन बैंक कहितली काली अबू धाबी कमर्शियल बैंक अबू धाबी ABN AMRO सिटी बैंक ये सब रूरल बैंक रो एग्जांपल किसी रूरल बैंक मानकर एग्जांपल कौन
जो तुम देखो ओडिशा रे कोन अछि ओडिशा ग्राम्य बैंक एमान करना गोटे स्पॉन्सर बैंक है रूरल बैंक रो मन तने को गोटे नेशनलाइज बैंक एमान को स्पॉन्सरशिप करे स्पॉन्सर्ड बैंक ओडिशा ग्राम्य बैंक रो बोधे सेटा सिंडिकेट बैंक ना कोन थिला मन नै मोटी ताले इस बुझिला हम मते कोन इमरजेंसी सिचुएशन इन नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन दे टेक लोन फ्रॉम आरबीआई से माने आरबीआई रो लोन नै परिबे ना नहीं दिस इज द समरी ऑफ सेकंड शेड्यूल दिस इज द समरी ऑफ सेकंड शेड्यूल को बैंक आसुचंदी सेकंड शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एसबीआई एंड एसोसिएट्स नेशनलाइज्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉरेन बैंक ग्रामीण बैंक ये सब आसवे सेकंड शेड्यूल तापर प्रेसिडेंसी बैंक तीनटा मिसला पर को बैंक हेतिला तीनटा प्रेसिडेंसी बैंक मिसला पर को बैंक हेतिला से बैंक रो नाटा पर कोन हला बैंक नेशनलाइजेशन पछरे कारण कोन थिला कॉजेस बिहाइंड बैंक नेशनलाइजेशन चल अभी जते पढ़ैले टिके टेस्ट करिया निजे कोन बुझी तो टिके टेस्ट करिया माने मु खाली पढौची इंपेरियल बैंक लैट्रॉन इंपेरियल बैंक हला तुमर कोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केतटा क्वेश्चन दउची टिके कल्ला देखिबा निजे पढौचो ना नहीं मु खाली पढौची टिके चेक करिया which of the following is definitely measure of indication of the state of the economy rate of gdp growth very good rate of gdp growth which of the following is equivalent to national income which of the following is equivalent to national income important एटा मन रखिबे एनएनपीआर कोन एनएनपीआर मार्केट प्राइस ना फैक्टर कॉस्ट एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट है ओ एटा एनडीपी लिखा है एनएनपी हां डी एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट एटा एनडीपी अछि which sector of indian economy contributes largest to the gdp which sector contributes largest to gdp Adhayan currently tertiary sector of C tertiary okay tertiary sector national income estimations are prepared by national income estimations are prepared by
C. Okay, very good. CSO. Main source of national income in India is the service sector. Okay. Who estimated national income in India for the first time? Who estimated national income for the first time? Yeah. Grand old man. Yes. Grand old man. Dadabhai Naraji. Very good. Existence of parallel economy or black money. यार impact कौन? इटा ଗୋଟେ बहुत बढ़िया question. A question I expect everyone to make it correct. ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଠିକ କରିବେ. Impact of parallel economy. कौन हम parallel economy और black money कौन करियो मु कहथिल दीटा कथा गोटे black money आ गोटे illegal money. Black money किए? Black money is untaxed money. Illegal किए? Source is illegal. Source illegal. मु कहली मु पढ़ाई की इनकम कली 5 लाख टैक्स देलिनी, that is untaxed. So that is a black money. पढ़ाई की इनकम कले भी जदि मु टैक्स न दउची, पढ़ाई वाइज a legal source. But टैक्स न दवा इज इलीगल. ताको हम कहबा ब्लैक मनी. इलीगल सोर्स कोन हमको ड्रग्स ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग एथुर आनिबो जोटा सेटाला इलीगल मनी. क्लियर? पैरेलल इकोनॉमी में ब्लैक मनी हेले कोन होय ना अनटैक्स्ड मनी बा एटा को अनअकाउंटेड मनी भी कहा जाए. अनअकाउंटेड मनी माने यार हिसाब नाही हम पाखरे यार हिसाब नहीं. जदि यार हिसाब नहीं को कहार हिसाब नहीं, लिक्विडिटी रो हिसाब नहीं, अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट केते हमकु जाना नहीं. कोन कहले व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी हमकु जाना नहीं. ताले कोन हो? जदि क्वांटिटी ऑफ मनी जाना नहीं ताले कोन हो? ताले एटी प्रॉब्लम कोन ना मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हे जु. मॉनेटरी पॉलिसी माने रेपो रिवर्स रेपो जोडा आसुच ये इनइफेक्टिव. तार ऑब्जेक्टिव कोन? क्रेडिट कंट्रोल. क्वांटिटी ऑफ मनी केते मार्केट रे ये देखौची ना, तो तो आपको जाना ही नहीं मार्केट रे केते मनी अछि, सो ऑटोमेटिकली एडा सब इनइफेक्टिव होबे कि नहीं. क्लियर? ईडी चढ़ो करियो. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जदि कहि छ गोटे कहिउ पॉइंट मन रखियो. ईडी रो काम कोन जान छ गोटे एक्ट अछि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. आकु एनफोर्स करबा होची ईडी रो काम. मन रख लेखिनियो. ईडी रो फंक्शन टू एनफोर्स टू इंप्लीमेंट पीएमएलए. हला नेक्स्ट. फिलोसॉफी ऑफ लासेज फेयर इज एसोसिएटेड विथ laissez faire is associated with laissez faire kon. What is laissez faire? भले बुझ. laissez faire means non interference of the state.
कौन कहली नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट माने स्टेट इंटरफेयर करूनी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट स्टेट इंटरफेयर करूनी ताले एटा को इकोनॉमी लासेस फेयर रो उल्टा लासेस फेयर रो उल्टा हला सोशलिस्टिक स्टेट देखो केमती भूल कला समझ स्टेट इंटरफेयर कले सोशलिस्ट लासेस फेयर माने नॉन इंटरफेरेंस स्टेट इंटरफेयर करूनी ता उल्टा किए जो स्टेट इंटरफेयर करूनी माने मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल स्टेट बुझेला कि नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज ए बुझ पाला भूल कौन कल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ठीक है मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज appropriate measure of country's economic growth is D per capita real income very good in free economy inequality in income is because of inequality in income it is because of marginal productivity माने किए केते ऐड करूछ मु केते ऐड करछि तुमे केते ऐड करछो जणे ऐड करछि लेट्स से जणे 5 दिन रे काम करछि जणे 4 दिन रे जणे 10 दिन तार कोन इंपैक्ट इनइक्वालिटी रो कोन इंपैक्ट इनइक्वालिटी केमति क्रिएट होछि धनी गरीब केमति भेदभाव केमति सृष्टि होछि ए भाबो इनइक्वालिटी माने एटी धनी गरीब कथा पड़ भाव ठीक हो प्राइवेट प्रॉपर्टी नुहे जनक पाखे अधिक जनक पाखे कम इनहेरिटेंस माने जनरेशन नु जनरेशन बापा पाखे जति पुओ पाक आसिला पुणी पुओ पाक गला दिस इज हाउ सो एटी कोन ना प्रॉपर्टी एक्युमुलेट होउची कोन जेटी प्रॉपर्टी एक्युमुलेट हे जाउची गोटे जनरेशन नु आ गोटे जनरेशन बुझेला एबे प्राइवेट प्रॉपर्टी जदि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सब थांदा ताहले इनइक्वालिटी नहीं ऑल आर इक्वल सोशलिज्म हेतांदा क्लियर नेक्स्ट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रो अर्थ कोन बहुत और पढ़े लेनी एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन किछि ना एथरे डिस्पोजेबल इनकम this is personal income minus direct tax is it is income tax who had done pioneering work on national income
बीके आरवी राव बहुत बढ़िया। Problem in calculating national income. What is the problem in calculating national income in India? Very good. Non-monetized consumption. Which is why is demographic dividend likely to be manifested in India in future? How is it? Why? How is? How is? कौन एटा कहितली यंगिस्तान रो कांसेप्ट मन अछि कि नहीं? Which is not part of India's economic planning. Not a part of India's economic planning. Indicative, indicative imperative difference एटा पढ़ाई 3 नंबर की 4 नंबर क्लास रे डिस्कस करनी सोशलिस्टिक कंट्री और मिक्स्ड कंट्री इकोनॉमी को प्रकार प्लानिंग प्रैक्टिस करछंती सोशलिज्म रे कोटा होय एवं मिक्स्ड इकोनॉमी रे कोटा होय अन्नकु ना नेक्स्ट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट कोटा भीतर इंक्लूड करछ व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिंपल क्वेश्चन समस्त कहबे both dita jack inclusive growth okay. Then next question is on real GDP and nominal GDP এটা भी important करो एवला क्वेश्चन आसीओ both real is calculated keeping inflation into consideration nominal in current year price रे calculate हेले nominal GDP current year price रे हेले nominal GDP
है सी बोथ आर करेक्ट एटा देखला जीडीपी डिफ्लेक्टर सेम टाइप रो क्वेश्चन जीडीपी डिफ्लेक्टर इज जीडीपी डिफ्लेक्टर it measures inflation what is it it measures inflation okay. Next human development index comprises literacy rate life expectancy at birth and एटा कहितली and old indicator थिला जीडीपी इन यूएस डॉलर एबे जीएनपी इन ट्रिपल पी यूएस डॉलर एबे कोन जीएनपी इन ट्रिपल पी यूएस डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी देखिए ओके डुअल इकोनॉमी रो अर्थ व्हाट इज डुअल इकोनॉमी डुअल इकोनॉमी कहले कोन बुझे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तो एका कथा ना दीटा दिस अबाउट द प्राइमरी ट्रेडिशनल प्राइमरी सेक्टर and modern secondary sector है activity rate depends on activity rate माने केते जल्दी काम करूछ activity rate रो अर्थ होची केते जल्दी काम करूछ हमें तब activity rate कहू है चलिए स्कूल लिविंग एज केते जल्दी स्कूल छाड़ 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष पॉपुलैरिटी ऑफ हायर एजुकेशन यदि हायर एजुकेशन डिमांड अछि पीजी एमफिल पीएचडी कोर्स ताले लेट हे जिवो एक्टिविटी रेट लेट हे जिवो सोशल कस्टम तुम कल्चर कोन कहूची एवं रिटायरमेंट एज कोन रिटायरमेंट एज 58 अछि ना रिटायरमेंट एज 60 अछि ना रिटायरमेंट एज 62 अछि ना रिटायरमेंट एज 65 अछि ये सब इंपोर्टेंट बुझिला कि नहीं मो ताले ऑल क्लियर एटा समझते ऑल ऑफ दिस इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन को लिस्ट रो अछि इकोनॉमिक प्लानिंग आज पर्यंत जहाँ पढ़ते सब ऊपर क्वेश्चन देछि जो जो टॉपिक पढ़ाई सब गुड़ाक देछि को लिस्ट यूनियन स्टेट कॉन्करेंट एटा को शेड्यूल रे अछि एटा को शेड्यूल व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल एटा कोथरे कॉन्करेंट लिस्ट यानी इकोनॉमिक प्लानिंग रो कांसेप्ट हमें कोड आनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक प्लानिंग रो कांसेप्ट कोड आसी
प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया नाउ प्लानिंग आनी आम फॉर्मर यूएसएसआर जो करेन्ट रे रशिया कौच यूके रु पार्लियामेंटरी प्रोविजन गुडा आनी गवर्नमेंट रिलेटेड आनी आम कौटू यूके रु कौन गवर्नमेंट रिलेटेड माने पार्लियामेंटरी इशू पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इशू आनी यूएस रु कौन आनी यूएस रु आनी फंडामेंटल राइट्स कौन आनी यूएस रु आनी फंडामेंटल राइट्स देन आनी जुडिशियल रिव्यू which of the following economists proposed LPG model केबे आसला एलपीजी 1991 रे आसला एलपीजी मॉडल ये मॉडल को कौन कहा जाए दिस इज कॉल्ड राव सिंह मॉडल कौन कौन देखो अपन राव सिंह मॉडल कहीं ना प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर सी इज द करेक्ट आंसर प्लानिंग टा कोडी मेंशन होईची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्लानिंग कोडी मेंशन होईची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी टा को पार्ट रे अछि पार्ट 4 प्लान हॉलिडे केबे केबे पर्यंत होइतला प्लान हॉलिडे इज इन बिटवीन एटा समस्त कहि परिबे फास्टेस्ट एक्सपेंशन को सेक्टर रही 1966 ରୁ 69 गला फास्टेस्ट एक्सपेंशन को सेक्टर रही सर्विस सेक्टर standard of living of a country is represented by its standard of living is represented by its by per capita income ठीक अच्छे चलो बहुत बढ़िया जी एति पॉइंट पढ़िले आमे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट कहली मनी मार्केट और एमसीक्यू कले आज लास्ट क्लास थिला इकोनॉमिक्स ठीक अच्छे रिविजन हो गला समस्तंकर सिलेबस डिस्कशन करदेली सरला इकोनॉमिक्स क्लास आउ क्लास नहीं कही काली कौन कले क्लास आसो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट जदि इंटरेस्ट थी ताले पुणी आगु पानी क्लास संकल्प केबे देखा काली कही केबे देखा तो मन डिमांड रे आसीबो क्लास डिमांड तो नहीं कहार क्लास पई पुराना क्लास जितने आम कवर करते से तो कहीं कही ना क्लास दरकार ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास पर्यंत
कंप्लीट सिलेबस ठीक अच्छे कहीज हो इन द मीन टाइम चलो गोटे इंपोर्टाट कहूँ शुण इन द मीन टाइम जेपर्यंत नेक्स्ट क्लास नई से टाइम पीरियड भितर गोटे काम करेंगे समस्ते एडिटोरियल क्लास पूरा कंप्लीट करेंगे जार जिते पेंडिंग अच्छी एडिटोरियल क्लास कंप्लीट करेंगे बुझे न बुझे मत कहे कमेंट लिखे आई विल चेक मुझे चेक करी किए बुझुची किए न बुझुची किए क्लास करुच्ची कि नहीं जना पड़ो एडिटोरियल इज इंपोर्टाट ताकू करंतु जदि ओसीएस एक्चुअली क्रैक करने को चाहूँ तार नोट्स करंतु जे पर्यंत नेक्स्ट क्लास न आसी नेक्स्ट क्लास आसीबो डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट